मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं नए टैलेंट को इंटरव्यू करती हूँ जो हमारी इंडस्ट्री में इंशाल्लाह चेंज भी लेकर आएंगे, क्वालिटी काम भी करेंगे। उन्हीं में से एक चेहरा है जो मैंने दिलरुबा में देखा था पहली बार। एंड व्हेन आई सॉ हर द वेरी फर्स्ट टाइम आई थॉट कि वाओ शी इज़ वेरी प्रिटी बट शी इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड। शी वॉज हानियाज़ सिस्टर, और हानिया एक मंची हुई एक्ट्रेस हैं, उन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी किए हुए हैं। उनके साथ काम करके अपने आप को मनवाना, अपनी प्रेजेंस करवाना, आई थिंक दैट वाज अ बिग थिंग। सो आज मेरे साथ हैं दुर-ए-फिशान। अस्सलाम वालेकुम दुर-ए-फिशान। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपका नाम सही प्रोनाउंस किया है ना? Dur-e-Fishan. Dur-e-Fishan. What does it mean? Dure means pearls and Fishan means eruption. So it's basically eruption of pearls. So कोई nickname है? दुर्रे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? Yeah, nobody calls me Dur-e-Fishan. फिर? Except Mama and Baba. Like Dure, Duriya, Duri, Fishan. Name it. Fishy विशी तो नहीं कोई कहता? Yeah, या स्कूल में तंग करते थे? In school I used to be called as Fishy. अच्छा. But my mother always hated everybody around me calling me Dure, Duriya. She's like क्या इतना अच्छा नाम है, Dur-e-Fishan के हैं. Yeah, माशाल्लाह. So पहले मुझे पसंद नहीं होता था नाम अपना, but later on like growing up I was like, oh, it's a unique name, I like it. So you went abroad to study, right? I went for an year, then I came back. तो वहाँ पे लोग कैसे प्रोनाउंस करते थे? वहाँ क्या कहते थे? दुबई क्या कहते थे? नहीं, people called me Dure. अच्छा. Yeah. Pronunciation is not an issue around the world, I think. Okay. Yeah, our names are very much common there. अच्छा. क्या चल रहा है भाई कराची? कैसा लग रहा है? Home? You feel like home in Karachi? अभी तक लाहौर में है? नहीं, Karachi has always been home. Like it always felt home because work is here and everything. But yeah, Lahore will always be. What do you miss most about Lahore? My mama. I think there's nothing more I miss than her. अच्छा, तो कितने बहन भाई हैं आप बता रही थी मुझे? हम 4 बहन भाई हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ। तो बाकी क्या हैं? कौन कौन है? बाकी मेरा एक भाई है, 2 भाई हैं और एक बहन है। अच्छा। और एक भाई मुझसे 1-1.5 साल छोटा है। वो टर्की में पढ़ता है अभी फिलहाल, so he is there. और मेरी एक बहन है, she's in 11th. मेरा छोटा भाई है। और अम्मी घर पे होती हैं? मम्मी घर पे होती हैं। मम्मी used to work पहले, but now she's at home since 8-9 years, and I think वो ही बहुत बड़ा काम है। That's true. Are you close? It looks like कि आप अपनी अम्मी से बहुत करीब हैं। मैं अम्मी अबू दोनों से बहुत करीब हूँ, but अम्मी especially, like my day doesnं't goes without talking to her, उनसे बात किए बगैर। हाँ, तो वो तो बहुत मिस कर रही होंगी ना? वो तो बहुत करती हैं। वो तो मुझे कहती हैं आ जाओ वापस। कहती हैं आप एक प्रोजेक्ट करो, तो शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड। लाइक व्हेनेवर आई गेट अ प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो वो मुझे सबसे पहले पूछती हैं लाहौर में तो नहीं है? आई लाइक नहीं मामा, काम ही कराची में। तो आई थिंक उनको वो होता है दैट। और पढ़ा हुआ कहाँ से आपने? क्या क्या किया हुआ है? मैंने आपके फैंस को जानना है, तो मैं सारी ना वो बायोडेटा पहले करके फिर हम ज़्यादा सीरियस वाले क्वेश्चंस पाएंगे। आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन। इट्स एन इंटरनेशनल डिग्री from UCL. Okay. And वैसे I've done my O and A levels from LGS in Lahore. That's about it. मैंने पढ़ा था आपने प्रैक्टिस भी किया हुआ है ना? मैंने असल में I graduated last year. Okay. तो मैंने जो भी प्रैक्टिस की है वो प्रैक्टिस तो नहीं उससे कहते हैं, because until you don't have a license you can't practice. But I have interned a lot. So I've interned with Asma Jahangir. Wow. Yeah. That must have been that was amazing. That was very exciting. So when she was alive, I was in like my first year, second year of LLB. So I interned with her. I've interned at AG office and many other like. So internships मैंने बहुत की हैं throughout the time. So क्या किस टाइप का लॉ पढ़ा हुआ है आपने? जो LLB होता है वो बहुत बेसिक होता है, मतलब वो उसमें आप 12 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और वो हर किस्म के होते हैं, but you have a choice. So I took intellectual property law and evidence law. Like I wanted to do something like that. Intellectual property law. Yeah. लग रहा मुझे कुदरत वैसे ही आपको ना इस साइड पे लाने की कोशिश करी थी, नहीं? नहीं, इस साइड पे तो intellectual property से related yeah, ना IP media laws से? are very media related and it's like everything. लेकिन I always wanted to be an actor, so there was no plan B. तो फिर law पे क्यों चली? Law was never a plan B. Law was a degree that I wanted to do because my mother and father were like, you can't go until unless you have a degree. I don't know, this is like Pakistani parents' logic. अच्छा. Which I totally disagree to. I feel you should be well educated and well read, and degrees have nothing to do with that. But उनको यही था कि you should have another career choice because आज भी पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि if you are an actor, it's not your
permanent career or something like तो that. मीडिया साइंसेज या कुछ पढ़ने का नहीं सोचा, डायरेक्शन कुछ नहीं है? No, I तो wanted to why study law law. of all the things? I don't know. Law has always काफी excited टफ me. होता है ना? I know it was आसान तो very नहीं होता tough. है, हाँ. It was very tough, but law has always excited me. Okay. तो I was like, अच्छा एक्टर तो मैंने बनना ही है. अच्छा. वो तो because this is what is my calling since बचपन. But I will do law and I will study that. तो मुझे ये बताएं, बचपन में क्या वो होता था कि शीशे के सामने खड़े होकर माधुरी दीक्षित के स्टाइल में अदाएं हो रही हैं या दुपट्टा घूम रहे हैं या कुछ डांस प्रैक्टिस या डायलॉग बोले जा रहे हैं, कुछ ऐसा होता था या नहीं? ऐसा कुछ नहीं? तो ये कमरा बंद करके होता था? No. I was the most overconfident person in the family. because I used to be like I am Madhuri. I am. Okay. So I used to dress up like that. I used to dance like that. बचपन से तो वो शीशे के सामने तो वो very low की चीज होती है ना. मैं तो ड्राइंग रूम में खड़े होके सेंटर टेबल पे this was me. घाघरा घुमा दो. बचपन and then I remember me being very overweight for my time spent when I was studying. And तब my parents thought that the thing is gone because I was a very studious kid too. So but तब भी I was on, because the other day my friend was sending me this video of her shadi 3 years back and I was like super overweight and I was dancing. I was seeing my expressions and I was like, dude, I'm really proud of me. मतलब इतना confidence with that weight, like dancing with all those steps and like thumkas, and I was like, so I was always like, I knew where I wanted to go. Okay. और अम्मी अब्बू कुछ नहीं किया, माँ बाप सही थे, सब कुछ नहीं होने? नहीं. My parents didn't say me anything. We just we have these table discussions in our house, we call them. So we just had 5 to 6 of them. Okay. So because initially तो they thought ना क्योंकि मेरा अच्छा डिग्री भी मेरी 2-1 आ गई थी और बड़ी अच्छी डिग्री होती और I was a very studious kid and everything. So they thought that I might just go in that profession and everything. So also I was very overweight. So my mother and father was like, she just wants to do it because a 21-year kid telling you they want to act and do this. They're like, अच्छा बाद में करेंगे बात. But one day when I came back from my graduation last year from London, so I just told my parents कि भाई मुझे जाना है कराची अब. तो उन्होंने कहा नहीं यहाँ पहले हम आपको मिलाते हैं 1-2 लोगों से. I was like नहीं, I want to go myself. Seriously? I will audition myself and I will see whether I have the potential because मैंने theatre वगैरह स्कूल में तो किया था but in front of the camera it's a different game I think. तो फिर I flew here. अच्छा, तो अम्मा अब्बा ने बिल्कुल नहीं रोका, उन्होंने कहा जाओ? नहीं, वो एक तो हफ्ते का होता था कि कॉन्वर्सेशन, वही टेबल कॉन्वर्सेशन. मम्मी ने ये नहीं बोला मैं साथ चलती हूँ थोड़ी दिन रहती हूँ? नहीं. वो तो शुरू से it was very clear, they know that how I am and everything. But yeah, so I came here, I auditioned every production house. अच्छा. Yes. तो कैसे in touch कैसे हुई, कैसे किया? बस कॉल करके पहुंच जाती थी? इतनी अच्छी दुनिया में रहते हैं जहाँ we have Google. Okay. और गूगल से आपको प्रोडक्शन हाउसेस के एड्रेसेस समझ आ जाते हैं. नहीं वो तो है, लेकिन वहाँ पहुँच के मतलब वो ऐसी तो हर किसी को नहीं अंदर कर लेते नहीं, लेकिन I'll tell you one thing. क्या हुआ? Here things are very different. I was taken aback too. यहाँ if you're an actor and if you want to go and drop for audition, you just call them and they place an audition for you. Oh wow. Like in every production house this is what happens. अच्छा, तो obviously I did have a contact or something like that. I won't be lying. I did had a contact. They made a call or 2, but most production houses I went by myself because I just had 1 हफ्ता, 1 week stay here. So I want to give as many auditions as I can.